आज 4 जनवरी 2026 को डॉक्टर KK SCFI के राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट के इस प्रोग्राम में हमारे सभी एक्सपर्ट मेंबर्स का और जो व्यूअर्स डॉक्टर KK अग्रवाल जी के यूट्यूब फेसबुक पे से जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। और सबसे पहले तो सबको नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। ये हमारे लाइफ में सबके बहुत एक स्वास्थ्य के लिए अच्छे, उनके जो है प्रोग्रेस के लिए और ओवरऑल बहुत अच्छा रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर KK SCFI की तरफ से। और आज का हमारा जो टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड हम सभी जान रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हो रहा है, चाहे वे हमारा वेदर पैटर्न हो या और बहुत से इश्यूज हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। और आज हम इस पे बात करेंगे। बेसिकली जो द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको हम CCPI कहते हैं, इज एन इंडिपेंडेंट टूल that mostly tracks and rank the climate protection efforts of these 63 countries and European Union, EU, that is. Which these 63 countries and EU together account for more than 90% of the global जो है GHG emissions that and also the climate and this particularly the CCPI is published by the German Watch, New Climate Institute, and the Climate Action Network. This is joint by these German Watch, New Climate Institute, and the Climate Action Network. That CCPI evaluate climate policy based on the 4 categories. That was I think we know that. We have also, I think, last year also we discussed. The 4 category include greenhouse gas emissions, which is weighed as the 40% of the total score. Renewable energy, weight 20% of the score. Energy use, this weight for the 20% of the score. And climate policy also for 20% of the score. So 40% is given for greenhouse gas emissions, and rest 20% for each 3 category: renewable energy, energy use, and climate policies. CCPI, this climate change performance index, evaluate country based on the 14 indicators across these 4 categories जो अभी लिस्ट हमने बताई आपको. As far as ranking is concerned for the CCPI 2026 climate change performance index, first 3 positions are kept vacant because there's no ideal country which is fulfilling all the requirement for the first 3 rank. So they started with the 4th rank, and 4th rank was the Denmark. That Denmark is the 4th rank with the 80.52 score out of 100. That was. And United Kingdom is in 5th rank with a score to 70 to 75. And India is on 23rd rank now with 61.31 score. And this is down with the 10th rank from last year. That was, this is down 13 steps. Previously it was 10th rank, and now it's 23 rank. The reason is that India moved from this rank, high rank, to medium because due to its continued reliance on the coal, and we cannot avoid that actually. And also lack of clear coal phased out timeline. We cannot give because of the energy security and other issue, and also weak carbon pricing. And this is the 23 rank despite the strong renewable energy and particularly growth and the policy efforts. Yes, we are doing that actually. So we have very strong in the climate policy and the renewable energy, but other 2 sector, particularly energy use, and because of that greenhouse gas emissions, we are the poor, and because of that we down about 13 steps from the previous ranking. And United States, which we always talk about, is on the last rank, bottom rank, 65 rank, because all you know that the policies and their planning and policy and decision for the
back out from the Paris Agreement and things like that. And this is down the 8 steps from the previous rank that was in. China is also on 54th rank with the 44.45 score that was. And basically, United States is in 65 rank with the 21.84 score that was. So we are in the medium rank, but we should at least what was the 10th position, we should achieve that. As far as warming is concerned, among the 6 global temperature database that World Meteorological Organization WMO ranks, the ERA 5 dataset published by the Copernicus Climate Change Service as a C3S this is the center of the European Center for the Medium Range Weather Forecast. It shows that the average warming in the year 2025 is 1.47 degrees centigrade. This makes year 2025 the third highest warming year. With the global warming temperature very close to 1.5 degree threshold as decided in the Paris Agreement. We are very close to 2025. However, year 2024 was the top of the global warming year. We all know that 2024 was the top, with warming temperature of 1.6 degree relative to the pre-industrial average temperature. That was the 1850 to 900 year. That was. The planet was on the more than 1.5 degree threshold, crossed that, and the 2024 that was. And year 2023 was the second in the warming year. So we all 3 consecutive years we have seen 2024 first warming, 2023 second, and 2025 third. That was. This trend of rising global temperature resulted in the past with more extreme weather events. We have seen that, like flood, drought, heat waves, and so on. So this is very, challenging for India to next steps we can take up. And this is very, very important for us to how our energy security and greenhouse gas emission we can reduce. So what, particularly steps need to be taken with respect to India. So we'll discuss about the issue. So first I'll request Dr. Ravinder Kumar for the what India can do further in the 2026 for the better the climate change performance index and what more steps can be taken. Over to Dr. Ravinder Kumar. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने बताया। 2-3 चीजें बड़ा अच्छी लगी कि जब हम यूएस से हर चीज में कंपैरिजन करते हैं तो कहीं इस चीज में हम यूएस से बेटर हैं जी। आपने शायद एक चीज और ध्यान दिया होगा कि यूएस का अगर 65 रैंक है तो रसिया का 64 रैंक है। 64 तो ये जो 2 सुपर पावर है यूएस और रसिया, ये दोनों ही लगते हैं ऐसे कि इनको क्लाइमेट चेंज इनके यहाँ मुद्दा अब नहीं रह गया। ये इनके लिए बस यही है कि वार कराते रहो और अपनी इकोनॉमी ठीक करते रहो जी। लेकिन इसमें एक और जो अच्छी चीज मुझे ये लगी, हम लोग बार-बार पाकिस्तान करते हैं सर। पाकिस्तान बेटर है, वो बेटर है क्लाइमेट चेंज में। पाकिस्तान का जो रैंक आया है मैंने देखा 15 है। हाँ। और इंडिया का रैंक जो है 23 है। हाँ। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बेटर परफॉर्म कर रहा है। हर चीज में हम वार तो करते हैं उनसे, लेकिन इस चीज में हम कभी ये कोशिश नहीं किया कि आखिर कोल एनर्जी पे डिपेंडेंसी उनकी है कि नहीं है, क्योंकि वो भी तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री तो नहीं है कि वो सारी उसकी गैस लाइन से सप्लाई हो या क्लीन कोल हो। मुझे ये थोड़ा सा समझ में आया नहीं कि आखिर वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं बेटर। ये थोड़ा कैलकुलेशन। हाइड्रो पावर बहुत अच्छी है, हाइड्रो पावर बहुत अच्छी बात है। हाइड्रो पावर अच्छा, हाइड्रो अच्छा है, मतलब जो एनर्जी है वो ज्यादा हाइड्रो से ले रहे हैं रादर देन कोल। अच्छा, ये एक अच्छी चीज है कि उन्होंने मतलब कोल से हटके हाइड्रो पे डिपेंडेंसी हुई है, तो ये अच्छी चीज है।
और साथ साथ जो अभी एक और चीज बताई थी आपने यूके की, यूके भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें जो चिली है, चिली भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चिली जो है अमॉन्ग द हाईएस्ट परफॉर्मिंग कंट्री मान सकते हैं, प्रोग्रेसिव है काफी। जो इनके जो डेटा है वो पब्लिश करके पब्लिक डोमेन में रखते हैं कि नेट जीरो हमें जैसे 2050 में करना है, या जो भी एनडीसी का कंट्रीब्यूशंस है, तो वो सारा डेटा भी शायद मुझे लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं अगर डेटा सही पब्लिक डोमेन में हो तो मुझे लग रहा है कि उससे भी काफी फर्क पड़ता है। जो चिली है इसमें काफी एग्रेसिवली जो है जितनी डेटा है ये काफी अच्छे से इसको रख रहे हैं, और इसके चलते चिली का जो जो आने वाले समय में रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो काफी एम्बिशियस गोल रखा हुआ उन्होंने कि इसको कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करें। साथ साथ इंडिया में भी काफी काम हो रहा है सर। आपको पता होगा जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी काफी बूम कर रहा है, और हर एक ऑलमोस्ट जितने स्टेट हैं सबने अपनी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी बना रखी है, और धीरे धीरे इसको फेज आउट कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफी हद तक जो डिकार्बोनाइजेशन है शुरू हो चुका है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें भी कई चैलेंजेस है, बैटरी का, स्वैपिंग का, और जैसे सोलर से चार्जिंग का, क्योंकि अभी अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो तो कोल से ही आ रही है हमारी। कहने को तो हम ईवी चला रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली हम कोल पे चला रहे हैं उसको। तो कई बार हमारे स्टूडेंट जो है बड़े हंसते हैं कि नहीं सर वो गाड़ी तो इलेक्ट्रिक से चल रही है। मैंने कहा नहीं, इलेक्ट्रिक से नहीं चल रही है तुम्हारी गाड़ी कोल से चल रही है। अब तुम सोचो कि ये लाइफ साइकिल एनालिसिस उसकी सही से करें, क्योंकि हमारी कोल पे करीब करीब 65 to 70% डिपेंडेंसी है। तो कहीं ना कहीं वहां पे जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बहुत ज्यादा चेक करने की जरूरत है। और साथ साथ हमारे यहाँ जो और कैप इनकम का इशू है, वो अगर हम कोल से बिल्कुल स्विफ्ट कर दें तो वो भी एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा समस्या होगा। तो कैसे इसको हम एम्प्लॉयमेंट से लिंक करते हुए साथ साथ क्लीन क्लीन कोल की पॉलिसी भी आई हुई है उसको भी यूज करते हुए कैसे बैलेंस करें, ये बड़ा चैलेंजिंग है। हालांकि चाइना में मुझे नहीं समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं। चाइना का भी बहुत अच्छा डेटा नहीं है इसमें। बट चाइना का सर 54th रैंक है, बहुत मतलब जो है चाइना इज नॉट इन गुड रैंक। हाँ, चाइना का डेटा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन में काफी आगे है चाइना जी। इंडिया से। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाँ। आप देखेंगे तो मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफी एग्रेसिवली उन्होंने मूव किया है। बट ओवरऑल सर रैंक में 54th है, और 44 पॉइंट स्कोर जो है करीब स्कोर है। बिकॉज अब हम कंपैरेटिव अगर देखें इंडिया चाइना का तो एनर्जी डिपेंडेंसी कोल पे ज्यादा है, इसका मतलब हाँ यही लग रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं वही है आई थिंक इसमें कोल। सर हमें जो हम अब छोटे कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं रैंकिंग में पॉपुलेशन एंड अदर थिंग्स, वी हैव टू सी दी, कहते हैं ना, यू कैन कंपेयर विद द एप्पल विद द ऑरेंज। आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज हम पॉपुलेशन और उसमें बहुत चीजों में हमारे हैं, तो कंपेयर हम नहीं कर सकते डेनमार्क और उससे। चाइना की पॉपुलेशन सर, इंडिया और चाइना तो ऑलमोस्ट, इनफैक्ट इंडिया ज्यादा ही हो गया। हाँ नहीं, और वही कह करीब रहे हैं हम करीब पॉपुलेशन में, मतलब अगर कंपेयर करें चाइना को अगर देख करके, तो वी आर मच बेटर देन हाँ, डेफिनेटली। सबसे मच बेटर है। तो लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है सर कि ये जो इंडेक्स होता है, जी। तो इस इंडेक्स के आधार पर कुछ इनको फंडिंग भी मिलती है कंट्री को, केवल इंडेक्स बनाते हैं, या इसके चलते कोई भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई गाइडलाइन तय होती है, या कोई फंडिंग होती है कुछ, या कहीं इसका बेनिफिट मिले? नहीं, तब आई तो थिंक इसका दे आर दी पर्टिकुलरली ट्रैक एंड जो है रैंक को पर्टिकुलरली करते हैं। एंड बाकी तो जैसे अभी कॉप में वगैरह हम डिस्कस होता है जो फंडिंग एंड अदर से आई, ये तो नहीं करते दैट वे जी। वो क्योंकि तो अभी आई अगर थिंक हमारे हमारे साथ अभी अजय राघव जी हैं, विल डिस्कस, एंड थैंक्स टू हिम कि अभी ज्वाइन किया उन्होंने। रैंकिंग रैंकिंग के साथ साथ अगर इनको अवार्ड भी मिले या कुछ फंड मिले तो आई थिंक ज्यादा ये प्रो होगा कि नहीं, क्लाइमेट चेंज के लिए जो कंट्री अच्छी कर रही है उसको थोड़ा और फंड दे, जी। जो नहीं कर रही है ठीक है उसको फंड कम कर दें, तो एटलीस्ट हम ग्लोबल लेवल में या यूनाइटेड नेशन लेवल पे
इसकी सोच होनी चाहिए कि नहीं, यूनाइटेड नेशन में कुछ इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, इसको लिंक कर, वो अच्छा कर रहा है, तो उसको इसके लिए जो क्लाइमेट रिडक्शन के लिए फंडिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फंडिंग है, या जो भी हो सकता है पॉसिबल, सब्सिडी है, फंडिंग है, ग्लोबल लेवल पे कुछ मिले तो इसका बेनिफिट हो सकता है सर। जी जी, तो थैंक यू। लग रहा है कि काफी अच्छा है, लेकिन साथ साथ ये अच्छा स्टेप है, कम से कम हम कुछ तो इंडिकेटर है जिससे हम वॉच करते हैं, कुछ तो पता चलता है। इसी बिल्कुल बिल्कुल, सिलसिले में सही में भी हमने एक सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर बनाया हुआ है सर, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, जी जी, जिससे सिटी का जो है ना, ट्रांसपोर्ट सिटी के सस्टेनेबिलिटी कितनी है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो ऑलमोस्ट पॉइंट के बेसिस पे हमने किया हुआ है, करीब 6-7 हजार सैंपल्स हैं उसमें, ओके सर्वेज का डेटा है, उसके हिसाब से हम वो भी देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट के हिसाब से वो कितना सस्टेनेबल है। तो ये इंडिकेटर का फायदा तभी है जब इसको गवर्नमेंट अडॉप्ट करे, या हाँ, अगर सेंट्रल लेवल और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन और वो वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था है जो इसको मिल करके आए सामने और इसके लिए कुछ हेल्प करे, तो मुझे लगे कि और बेटर हम ये लोग कर सर सकते कॉप हैं। वगैरह में भी डिस्कस होता है, कॉप में ऑलवेज जो है इसका आता है, और कॉप के टाइम पे ही ये होता है, इस रैंकिंग आती है मोस्टली, तो ये अच्छा है दैट वजह। सो विल डिस्कस अगेन विद डॉक्टर रविंदर। नाउ आई विल रिक्वेस्ट अजय राघव जी, who is very senior officer and MOE CC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं राघव जी से 2 बार बहुत बिजी थे, वॉज ट्रैवलिंग, तो मैं पोस्ट कॉप 30 का रखना चाह रहा था, बट ही वॉज सो बिजी विद द पार्लियामेंट एंड अदर थिंग्स जो है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजय, डॉक्टर अजय राघव से कि आप इस विषय पे पर्टिकुलर आज के टॉपिक पे योर व्यू, बिकॉज आपके जो है मिनिस्ट्री के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के व्यूज जो हैं ओवरऑल। डॉक्टर अजय राघव प्लीज। Thank you, Dr. Anil. Am I audible? Yes, yes, yes. And visible? Yeah. Visible also. Okay. Yeah. Okay. So I was there since beginning. Actually, I have not joined recently. I'm listening. So I think this is a good topic for discussion. You have, I think, in your inaugural the introduction, I have given, I think, outline of what CCPI is. I just wanted to mention to everybody who is listening that these initiatives, like the CCPI, of course, is being monitored for last 20 years, since 2005. And you mentioned about 3 organizations. So these are basically NGOs and think tanks, and all 3 of them are based in Germany. Now, there is another index called the EPI, Environment Performance Index, which is also very similar, which also has climate change component as part of the environment, and that is being done by Yale University in US. Now, there are around 40 indices which are there, which are ranking countries on different aspects, and often these are taken as as an independent study, because just now I think Dr. Ravinder mentioned that UN should take over and others should, but these are all, I would say, more of academic exercise. We have interacted with these agencies. Sometimes they are transparent, sometimes they are not transparent in terms of how they have evaluated. Last 5 to 6 years, government has taken these rankings very seriously. And I remember in 2020, during COVID time, when this became more prominent, and there were meetings at the highest levels in the government to take it more seriously. So there were several initiatives at the cabinet secretariat level, at the Niti Aayog level, where various ministries were tasked to look into these indices so that government or India can improve ranking in each of them. So there are 40 indices which the government
from time to time. And two of them are with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The one, the CCPI, and the other one being the EPI. There is another called the Climate Risk Index that is more related to disasters. So it is with the Ministry of Home Affairs. So there are several indices, particularly on the CCPI. As academic people, we can always debate how the rankings are changing. But my view is that apart from the technical reasons, the ranking also fluctuates in many cases due to political reasons. Now, India has been doing quite well in the CCPI and have been ranked in the top 10 in last 5 to 7 years. Yeah. We can see those rankings in the 2020 onwards. It was consistently around 8, 9, 10, 11, 7, even 7 in 2024. And you mentioned that first 3 ranks are not being given. So we were virtually 4th. Now suddenly from 10th, we have gone to 23. So if these were really true and they were based on these scores which you had mentioned, 40% for GHG emissions, renewable energy 20%, energy use 20%, climate policy 20%. And there are 14 indicators within these 4 categories. And in each of them, we have analyzed, we have also had reasons why they were there. So if I go to the GHG emissions, 40%. Now these 2025 report was based on the 3rd national communication which India had released in December 2023. In that, we had the greenhouse gas inventory of 2019. Now, after 1 year, in December 2024, we had released the biennial update report, which had the inventory for 2020. So CCPI of 2025 had taken the data from our 3rd national communication. CCPI for 2026 had taken data from our 4th biennial update report. Now, from 2025 to 2026 report, our emissions have actually reduced first time by around 7.93%. That is around 8% our emissions has reduced. So there is no reason that why our score should go down in this. But our score has gone down. We had asked these questions, there is no reply so far. Now, on the renewable energy sector, there have been tremendous increase in the expansion of the installation of the renewable energy in 2023 and 2024. The capacity has actually increased tremendously in last 2 years. The NDC target of 50% non-fossil fuel based electricity generation capacity, which was to be achieved by 2030, was achieved in 2025 June, 5 years ahead of the schedule, which is now standing around 52%. So it clearly shows that there is a tremendous jump in the renewable energy also. There also our rank has gone down. On to the 3rd, energy use. In this also, if you see the energy use, I know that it's coal dominated, but the coal is because of the availability of the resource in the country. Now, if you go to the Middle East, it is all oil based. If you go to Russia, it is also, they have their fossil fuels. US also, you mentioned about these 2 countries coming last because their recent policies, especially in terms of US, have been to come out with the Paris Agreement. So it is a political message. It is not that the US is at the last, but it's a political message.
Similarly, I am very perplexed that China is 54th rank. China is the leader in renewable energy. In fact, the whole world's more than 50% of the renewable energy installed in last decade or so has been in China. So they have been far ahead of all the Western countries in terms of taking, initiatives in renewable energy expansion. Their electric cars are now among the highest all over the world. So it is all, I think, more of a political reason, which I think have changed these numbers. On energy use also, coal being dominant, but we have seen that the share of the units from the renewable energy also is increasing. So, and finally, on the climate policy, we have taken number of initiatives for different sectors. Now there is a very ambitious hydrogen policy, green hydrogen policy, in which we want to become the leader. It's a declared policy by 2030. There are progressively number of policies which we have taken on the renewable energy expansion. There are new policy directions on increasing the share of renewable energy, whether through RPO and others. There are also energy efficiency norms which cut across different sectors. The Bureau of Energy Efficiency under the Ministry of Power also has taken a number of initiatives. There are also a number of initiatives in the green transport. India is among the fastest growing sector in the metro. There are at least 22 cities which are building metro, and we are already number 3rd in the world right now in the number of kilometers of the metro which are being operating, and very soon we will be number 2 after China, despite being a country which has started very late in metro construction. There are other public transport initiatives, both in railways as well as in the electric buses sectors across the country. So all these measures which I mentioned are in the public domain, and people can see, and they have been increasingly being done in the last 1 or 2 years. So ranking going down from 10 to 23 is very surprising, and 13 to 25 or 10 to 23 overall is very surprising. So that's why I really wanted to mention that we can only see these as one of the yardsticks, but not the only yardstick to judge how we are doing in the climate change arena. We can always have some critical views on how we handle our air pollution or water pollution or solid waste management. But when it comes to the climate change, the issue is very different, because we should not, I think many people try to mix environmental issues with the global climate issues, because the climate change is because of the greenhouse gases, and the other are because of the local air pollutants. That is why our environment acts, whether it's Environment Protection Act, Air Act, Water Act, or even the Forest Conservation Act, Indian Forest Act, PLI and others, they have no standards for greenhouse gases, because increase or decrease in the greenhouse gases is directly linked to your development. And we, as I mentioned earlier also, that climate change is linked to the development. It is linked to the developmental deficits which we already have. The developed countries have grown in last 200 years by using the fossil fuels. And we are not saying that we will continue to use the fossil fuels, but if change of fossil fuels to renewable energy and other clean sources is required, and you all know that there is large increase in the capital investment,
an upfront investment has to be done. So you require finance and also the technology. In many cases, whether it is reduction in the emissions in the steel sector, which accounts for around 5 to 6% in India, or in cement sector, which again is around 5%, or in any other high-end industries which require these technologies, which are available with the developed countries, should be freely available to the developing countries if you really want them not to tread the same path which the developed countries have taken. And that is not happening. They are now saying that our economies are not growing and your economies are growing. So you try to mend yourself and do whatever you want to have through your own resources. And so कहीं से कोई म्यूट कर लीजिए, किसी का आईफोन से कुछ आ रहा है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. So this is when we say about the NDCs also that we are going to achieve, we always give an conditional NDC that everybody wants India to do much better, but at what cost? When we say that we have to increase our, our renewable energy further or phase down our coal, then it comes at a cost. When the oil is available at a premium, there are geopolitical reasons, there are other reasons. So you will continue to use the resource which is available with you, and that is the coal. Now, when you talk about expansion of renewable energy, it requires the manufacturing of PV cells. It also requires batteries. Critical minerals are not available with India. When you are giving expansion of the renewable energy, it is directly or indirectly helping other countries from where India is taking imports. So we are actually helping China by increasing the renewable energy. And that's the world is also doing that. If you have to increase the electric cars, again, countries like China are dominating. We have to, make those conditions and those resources available to our industry so that they can help in the low carbon development. So there is a talk of reducing greenhouse gases, and they compare Germany with India, but Germany has already reached the peak. They are supposed to have a peak in 1990 when the Rio summit, the summit happened in 1992. The UNFCCC was born, and which came into force in 1994. The developed countries were asked to reduce their emissions from 1990 level, whereas the convention very clearly says that the developing countries will continue to increase their emissions because of the development requirements. So we have not reached the peak. Even the China has not reached the peak. Okay, so our emissions are going to increase, but the rate of increase of emissions is going down. We are increasing at the rate of around 3.9 to 4% CAGR. But our economy is growing at 7 to 8%. So we are decoupling from the GDP growth and the GHG growth. So that is why our target in the NDC is emission intensity, not the emission reduction. It is the emission intensity reduction. So people get confused that we are going to reduce our emissions in the near future. That is not possible, because you have to provide electricity, a good quality electricity, to 1.4 billion people. You have to provide free or low-cost housing, which requires both cement and steel and other material. You have to have expansion of our national highways, ports, harbors, which requires, again, these materials which will have greenhouse gas emissions. There is no place in the world which produces steel or cement without greenhouse gas emissions. There is no place. So you can say that wherever the development is happening, wherever construction is happening, greenhouse gas will be emitted. So saying that you become net zero
by so and so date, it's very difficult. You know, green hydrogen, which everybody is talking about for hard to abate industries, is again a very distant future. CCUS is a very distant future. I think this has been happening since even last 40 years, 50 years, even when the climate change was not a problem. CCUS, carbon capture, utilization, storage, is only demonstrated in few pilot scales. They are not come at a level where it is economical, where you can have whole country level, capturing of the CO2, because CO2 is generated everywhere. You have so many thermal power plants. You have so many vehicles it is having, tailpipe emissions, CO2. So how we are going to capture CO2 from the atmosphere? And only way we all know is the plants or the trees. But there is also a limit, where we can. We have at the moment 3 billion tons of emissions roughly, and 500 is taken care of by our land use and forest sector. Again, in the forest sector is only contributing, or our tree is only contributing about 1/3. People, don't know that a lot of sequestration is happening from our agricultural areas also. So soil organic carbon increase contributes twice the carbon sequestration than the forest and tree cover in the country right now. So agriculture sector again is a very important sector for fighting the climate change. So I think we can go on discussing this issue. I just wanted to flag that CCPI is a good indicator, but we should see it as just one of the studies. And it is not only a technical issue, but also greatly a political issue. That is why the ranking of the countries are changed at their own will. We have tried to discuss with these agencies, but they are not, very forthcoming in giving, any leeway. They continue to talk about how they have done, and these, methodologies also changes from year to year. Many times they are changing, and they forget about the historical responsibilities of the developed countries and only talk about what is happening now. So I just wanted to end and clarify some of the points which I listened before. Thank you, Dr. Raghav. You very well spoken all about very, very comprehensively. And definitely, I think these are the, including you already spoken EPI also. We are India doing so much things, but we are coming in the bottom range that way. So these are the maybe academic exercise, but with the political some kind of their agenda that we have to. But definitely, once we know that, we have to try to. We already doing, but we have to more try to improve that. So thank you so much. We learned a lot from your lecture today. And I'll request, because already we are 12:45, we have very short, we can discuss with the other place speakers, very 2-3 minutes for like each. Khandelwal ji, you want to say any comment or anything you want to add that something, or you want to, in West sector is some contributor? No, not today. Not today? Okay. Yeah. Okay. So definitely, Neeraj Tyagi ji, I'll request Neeraj Tyagi ji to, because he has also studying a lot in particularly this environment and climate change sector. So over to Neeraj Tyagi ji. जी नमस्कार, सभी को प्रणाम और नए साल की बधाई के साथ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये CCPI, और जैसे कि डॉक्टर प्रवीण कुमार जी ने पाकिस्तान की इशू की भी, पाकिस्तान में की रैंकिंग इतनी अच्छी क्यों है, तो ये सीधा साधा है कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पाकिस्तान में फाइनेंस, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है और वहाँ रिस्क भी बहुत ज्यादा है, हाइड्रो पे डिपेंडेंट है। तो वो हम जब दो कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो उनकी जो कंडीशंस हैं, उनकी पॉपुलेशन और उनका जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, वो भी हमें देखना चाहिए। तो जहाँ डेवलपमेंट ज्यादा होगा तो वहाँ पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा। जैसे कि वेल्दी नेशंस या जब प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है तो क्राइम भी बढ़ते हैं, उसी तरह से ये पॉल्यूशन से भी रिलेटेड है।
डॉक्टर राघव जी ने जो कहा कि इसमें ये इसी इंडेक्स को क्यों CCPI को, ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, इसमें इसी को एक क्राइटेरिया ना माना जाए, लेकिन ठीक है, वो पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि वो एकदम से इंडिया को नीचे कर दिया। पहले इंडिया ऊपर था और ऊपर के 3 जो रैंकिंग है वो छोड़ी हुई है बिल्कुल। जो चौथे नंबर पे डेनमार्क है। तो ये सब इंडेक्सिंग है, इसमें कुछ हो सकता है, कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी का भी थोड़ा सा रहता है, जो NGOs लगे रहते हैं। CCPI जो जर्मन वाच न्यूक्लियर और न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन्होंने ये इंडेक्स निकाला और ये 63 जो नेशंस हैं और यूरोपियन संघ की रैंकिंग करता है। अब इसमें सबसे बड़ा झोल ये है कि इतने अलग अलग देशों को एक तराजू पे तोलना। डेनमार्क बनाम भारत, क्या कोई कंपैरिजन हो सकता है? या अमेरिका जैसा पुराना धुआंधार, इतना धुआं छोड़ता था, बनाम नया खिलाड़ी। ये तो ठीक उसी तरह से है जैसे गौतम गंभीर को विराट कोहली से बोल दो आज तुम मेरे से तेज दौड़ो, बाकी तो मजाक है। और फिर 20% विशेषज्ञों की राय। अब राय तो भाई राय होती है, आज किसी की तो किसी, अब सिर्फ राय से तो कुछ नहीं होता ना। भारत को 27वें नंबर पर ठोक दिया गया है क्योंकि कोयले की खपत बढ़ रही है। जब डेवलपमेंट होगा तो कोयले की खपत भी होगी, चाइना में भी बढ़ रही है। लेकिन जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश, उनकी फैक्ट्रियां भी तो उत्सर्जन कर रही हैं, उनको उस कंट्री में नहीं जोड़ा जाता। वो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो वो एमिशन दूसरे कंट्रीज पे ठोक दिया जाता है। ऊपर से सिर्फ उत्सर्जन देखते हैं, फंडिंग और सब कुछ बाहर। सच्चाई ये है कि ये इंडेक्स कम से कम बस थोड़ा सा एक इंडिकेशन हमको कुछ ना कुछ डिस्कस करने के लिए, कुछ सोचने के लिए जरूर मजबूर कर रहे हैं। और ये रैंकिंग देखकर लोग सोचते हैं अरे मेरा देश कितना नीचे, लेकिन असल में तो ये एक बिजनेस भी है। थोड़ा सा इसमें, जैसे डेनमार्क को पहले नंबर पे रख दो, लोग बोलेंगे वाह स्कैंडिनेविया तो असली चैंपियन हो गया। और फिर वही डेनमार्क अपने यहाँ ही गैस के प्लांट भी खोल रहा है, लेकिन नाम कर लिया कि वो ग्रीन कंट्री। और ये जो औसत एवरेज लेते हैं ना, उसमें चीन को 5वां नंबर मिल जाता है क्योंकि वो बड़े पैमाने पे सोलर लगा रहा है। लेकिन आप पर कैपिटा देखिए तो वही पुराना, आपको उसकी पोजीशन पुरानी लगेगी। ये इंडेक्स कम ज्यादा आईना है, ज्यादा तो एक शोबाजी है। अंदर क्या चल रहा है, इसको देखने की जरूरत है। अंदर से वही गेम चल रहा है। अमेरिका का नंबर 30 पर है तो वो बाहर से बोलते हैं हमने तो कार्बन टैक्स लगा दिया, और घर के अंदर रिपब्लिकन पार्टी वाला कोई सीनेटर गैस ड्रिलिंग को हरी झंडी दिखा रहा होता है। चीन में सोलर वो ग्रीन एनर्जी, लेकिन सोलर पैनल फैक्ट्रियां लग रही हैं वहां पर, और उसी फैक्ट्री का 60% जो कार्बन एमिशन है वो चाइना में ही निकल रहा है सारा। तो ये सब एक जो मापदंड है, वो भी उन्होंने एमिशन को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक तो वो पर कैपिटा डाटा लेके चलते हैं और दूसरा ग्रॉस डाटा, कुल। अब ग्रॉस में देखो तो चीन सबसे ऊपर, और पर कैपिटा आप कर लें तो वो नीचे आ जाता है। अब सवाल इस बात का है कि हम किसको ज्यादा वेटेज दें। इंडेक्स कहता है कि दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। अब एवरेज आप निकालेंगे, एक तरफ तो 200 करोड़ लोग 10 किलो कार्बन उगल रहे हैं, दूसरी तरफ 1 करोड़ लोग 5 किलो, और अब आप कुल दोनों को मिलाओ तो जो रिच कंट्री है, अमीर वाला, वो जीत जाता है। और ये डाटा कहाँ से आते हैं? ज्यादातर सरकारी रिपोर्टों से। अब अमेरिका बोलता है हमने एमिशन कम कर दिया, पर वो गिनती में उसको शामिल नहीं करेगा। एशिया में क्योंकि उसके आउटसोर्स फैक्ट्री से निकल रहा है, उसकी फैक्ट्री